Hello everyone, I am Simar and I welcome you all to online workshop on pencil shading. This workshop going to be very helpful for the learners who want to learn pencil shading or pencil sketching and ये वर्कशॉप कोई भी एज के लर्नर्स अटेंड कर सकते हैं and this is free of cost. You can practice here various techniques of pencil sketching and I am going to tell you various tips and tricks of sketching and also I am going to tell you the secrets how to create your sketching more realistic. So guys, without wasting any time, let's get started. So this is the list of required materials. So वर्कशॉप के लिए आपके पास पेंसिल्स होनी चाहिए 2B से 10B तक की पेंसिल्स आप ले सकते हैं. एनी ड्राइंग शीट यू कैन यूज़ और प्रिंटर वाला A4 साइज पेपर भी यूज़ कर सकते हैं एंड इसके अलावा आपके पास इरेजर एंड एक रूलर होना चाहिए. This workshop will be helpful for you to understand the use of basic shapes to easily construct drawings and forms, and even you will understand light and shade, values and tones. You will surely gain mastery of shading techniques to create the illusion of depth and form, and even you will understand how to create realistic drawings using various types of pencils. सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो पेंसिल शेडिंग करने के टाइम आपको ध्यान में रखने हैं, जिसके साथ आप अपनी स्केचिंग को और इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बना पाएंगे. So the first tip is in shading it is better to use a blunt pencil than a very sharp one. So अपनी पेंसिल को आगे से ज़्यादा तीखा मत रखिए, उसको थोड़ा ब्लंट ही रहने दीजिए. So it will be more effective. The second tip is use B pencils as they are darker and will give enough depth in drawings. As there are three types of pencils, H for hardness, B for blackness and F for fine point. But the B pencils are best for pencil shadings. So आप B pencils use करें हमेशा pencil shading के लिए. I have already discussed about it in more detail in my online drawing and sketching classes. If you want to check out these classes, the link is given in the description. So the another tip is make strokes near to each other that it will be difficult to notice the different strokes. And the next tip is don't overshade the drawing because it will be easier to add tones than remove them by eraser. So इन बातों का ध्यान रखें. Another most important thing to know is value, which is very essential element of drawing and sketching. So what is value? So value simply refers to how light and dark an object or area is. So you can see here a value scale, black and white, and the shades of gray in between the two are called values or tones. There are two types of value scales that are linear and Lambert value scale. So now I am going to start the practical part of this workshop. आप अपनी pencils and papers अपने साथ रखें and now I am going to create a value scale first of all, which will be a simple value scale. एंड देन इसी वैल्यू स्केल को फॉलो करते हुए हम वेरियस टाइप्स ऑफ पेंसिल शेडिंग को प्रैक्टिस करेंगे, स्केचिंग टेक्निक्स को प्रैक्टिस करेंगे इसी वैल्यू स्केल के अकॉर्डिंग. ओके, जो ये एक्सरसाइज मैं करने जा रही हूँ, दिस इज़ द वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ पेंसिल शेडिंग. सो आप सबको इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है सो दैट यू कैन क्रिएट रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स विद पेंसिल्स. यू कैन सी मैंने पेंसिल को आगे से थोड़ा ब्लंट ही रखा हुआ है. इट इज़ नॉट टू मच शार्प. सो आई एम गोइंग टू यूज़ 5 pencils फॉर ऑल these practices which are from 2B to 10B. First of all, I am going to use black pen to create margins and then I will create various scales. Then I will apply various types of pencil sketching in these scales. टेक्निक्स के साथ साथ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आप इन टेक्निक्स को अपनी स्केचिंग एंड ड्राइंग में कैसे अप्लाई कर पाएंगे.
आप इसके लिए पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। जो स्केल्स क्रिएट करने हैं मैंने पेन यूज़ किया है, बट यू कैन ऑल्सो यूज़ पेंसिल फॉर दिस। सो आई विल क्रिएट 6 स्केल्स। फर्स्ट में मैं सिंपल वैल्यू स्केल क्रिएट करूँगी एंड देन 5 पेंसिल टेक्निक्स जो स्केचिंग टेक्निक्स होंगी वो मैं उनमें अप्लाई करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू स्केल। We will move from white to black, from light to dark. Okay, so first जो ब्लॉक्स होंगे उनमें मैं कुछ भी फिल नहीं करूँगी, उसको मैं वाइट ही छोड़ दूँगी एंड देन आई विल जस्ट अप्लाई शेडिंग फ्रॉम द सेकेंड ब्लॉक। दिस इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको 5 ही पेंसिल्स यूज़ करनी है। आप 1 और 2 पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हैं। 4B और 6B पेंसिल के साथ भी ऑल वैल्यू स्केल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास जस्ट एक ही पेंसिल अवेलेबल है तो आप जस्ट एक ही पेंसिल के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना होगा देन कि आपको उसमें वेरिएशन लेके आनी है। मैंने 8 पोर्शंस का एक ग्रिड तैयार किया है स्केल के लिए, बट ये ग्रिड 8 से ज़्यादा का भी हो सकता है और इससे कम का भी हो सकता है। सो आप अपने हिसाब से स्केल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें 5 टू मैक्सिमम जितने भी आप चाहें उतने आप ग्रिड तैयार कर सकते हैं। सो यू कैन सी वी आर मूविंग फ्रॉम लाइटर टू डार्कर। जैसे जैसे आप डार्कनेस की तरफ मूव करोगे जो नंबर है वो भी पेंसिल का इंक्रीज होता जाएगा। यू कैन यूज़ 8B और 10B पेंसिल्स फॉर मोर डार्कर एरियाज, क्योंकि जो कम नंबर्स की पेंसिल होती हैं वो कम डार्क होती हैं। जैसे कि अगर आप 2B पेंसिल यूज़ करोगे वो थोड़ी कम डार्कनेस देगी, मगर इन कंपैरिजन अगर आप 8B की पेंसिल यूज़ करोगे और 10B की, दैट विल बी मोर डार्कर। एज जैसे जैसे पेंसिल का नंबर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे उसकी डार्कनेस और बढ़ती जाती है। इवन जो डार्कर पेंसिल्स होंगी वो सॉफ्टर होंगी। सो 10B की पेंसिल सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होंगी बाकी पेंसिल्स के कंपैरिजन में। सो आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड द वैल्यू स्केल। सो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं वेरियस टेक्निक्स ऑफ स्केचिंग जो है उनको आगे आगे अप्लाई करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द टेक्निक्स ऑफ पेंसिल शेडिंग और स्केचिंग। इन दिस वर्कशॉप आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई ओनली 5 टेक्निक्स। सो अगर आप इसके ज़्यादा पेंसिल स्केचिंग की टेक्निक्स को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, सो यू कैन चेक आउट द लिंक्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। जो मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं उनमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। सो नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई द फर्स्ट टेक्निक विच इज़ हैचिंग। एंड हियर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हैचिंग। ये स्केच मैंने 2011 में बनाया था। यू कैन सी इन दिस वे यू कैन हैच। यू कैन अप्लाई हैचिंग इन एनी डायरेक्शन, बट एक ही साइड को लाइंस होनी चाहिए, ठीक है। सो यही टेक्निक को मैं इस वैल्यू स्केल में अप्लाई कर दूंगी फ्रॉम लाइटर टू डार्कर। These various types of pencil sketching are used for creating various textures. बहुत सारे texture हम create कर सकते हैं इन techniques को use करके, and the texture is the most important element of art. And we can create the illusion of various textures with the help of these techniques. So our hatching value scale is ready. So second technique is cross hatching. पहले हमने एक साइड को लाइंस लगाई थी, बट इन दिस वी विल जस्ट अप्लाई दी लाइंस ऑन बोथ डायरेक्शंस। क्रॉस हैच कर देंगे उसको, ठीक है, इन दिस वे। आप यहाँ देख सकते हैं एक पेन स्केच जो क्रॉस हैचिंग टेक्निक को यूज़ करके बनाया है मैंने। एंड लेट मी शो यू वन अदर एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस हैचिंग।
So in this way we have just completed the cross hatching scale also. So the another technique we are going to use now is blending, and you can see here the example of blending. फेस में जो शेडिंग की है वो ब्लेंडिंग टेक्निक को यूज़ किया है इसमें, एंड इसमें आप शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए ईयरबड्स कॉटन को यूज़ कर सकते हैं। Right now I am just applying the shading. After this I will just blend it with the help of earbud. ब्लेंडिंग टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की सॉफ्टनेस दिखाने के लिए, and even in portraits we can use this technique. So now with the help of bud I will just smudge this shading. So we can also call this technique blending or smudge technique. So let's move on to another technique of sketching, which is stippling, and we can also call this technique as pointillism. And here you can see an example of stippling or pointillism. इस टेक्निक में हम जस्ट डॉट्स लगा के स्केच क्रिएट करते हैं, एंड यू कैन अप्लाई डॉट्स इन दिस वे. So here I am going to create another scale for our fifth technique, which is scribbling. Scribbling technique is also called as scumbling, so don't get confused between both names. आपको पता होना चाहिए scribbling and scumbling is the same technique. Okay, now let me show you the example of scribbling technique. So आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेन स्केच है जो मैंने यही टेक्निक को स्क्रिबलिंग टेक्निक को यूज़ करके बनाया है. So आज हमने जो 5 टेक्निक्स यूज़ की हैं, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, ब्लेंडिंग, स्टिपलिंग एंड स्क्रिबलिंग, एंड इनमें से जो लास्ट 3 टेक्निक्स है, ब्लेंडिंग को भी हम 2 नाम से जानते हैं, ब्लेंडिंग और स्मज टेक्निक, एंड स्टिपलिंग इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिलिज्म, एंड स्क्रिबलिंग इज ऑल्सो नोन एज स्कम्बल. सो आई होप आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं इन टेक्निक्स को, एंड आई होप कि आपको कुछ नई बातें भी पता चल रही हैं इस वर्कशॉप के थ्रू.
we have just completed all 5 techniques, and now I am going to tell you some other important things. Next important thing जो sketching के लिए important है वो है shapes. सबसे पहले आपको basic drawing shapes की practice करनी होती है. Then you can create various forms with the help of these shapes. So shapes are formed by lines when both ends of lines are joined. So shapes की मदद से ही हम वेरियस फॉर्म्स जो नेचुरल फॉर्म्स भी हैं उन्हें क्रिएट कर सकते हैं. शेप्स आर फ्लैट. दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, इरेगुलर शेप्स और ज्योमेट्रिक शेप्स. विद द हेल्प ऑफ शेप्स वी कैन क्रिएट वेरियस फॉर्म्स. ओके, जो हम फॉर्म्स क्रिएट करते हैं वो जस्ट एक इल्यूजन होता है जो हम वेरियस वैल्यूज़ को ऐड करके एक ऑब्जेक्ट को 3D लुक दे सकते हैं. अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट thing to know is the light source. Light and shade को समझना बहुत ज़्यादा important है, and light source is the main factor in this arrangement. अगर light available होगी तभी हम various values को add कर पाएंगे एक object को create करने के लिए. So when light falls on an object it creates volume. तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी टाइप्स ऑफ लाइट एंड शेडो को दिखाया है. इसको आप समझने के लिए वीडियो को चेकआउट कर लेना बाद में, एंड यू कैन सी कौन कौन सी टाइप्स ऑफ लाइट होती हैं एंड शेडो की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं. ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट शेप्स इनटू फॉर्म्स. सो हम एक और एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम शेप्स को फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे. आप भी मेरे साथ साथ ये एक्टिविटी कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप एक आउटलाइन को 3D लुक कैसे देंगे एंड उसमें वॉल्यूम्स कैसे ऐड कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन कन्वर्ट ए 2D थिंग इनटू 3D फॉर्म. So you just keep these basic things in mind while shading. That highlighted areas on an object are those that fall directly in front of the light source. So यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मैं हाईलाइट क्रिएट करूँगी तो आप देखेंगे कि इस साइड से लाइट सोर्स है तभी यहाँ पे लाइट पड़ रही है. ओके, बट इसकी ऑपोजिट साइड पे हम शैडो क्रिएट करेंगे. So I hope आप understand कर रहे हैं. If you have any query or you want to ask any question, you can comment me right now. And in this way you can create a circle into sphere and its turn to convert a square into a cube. So I have just created the outlining of cube and now I am going to add shading into it. You can blend your shading in this way. Let me add some darkness on the back side of the cube in this way. Shadows start from the base of the object where there is no light at all.
and moves further away from the light source. As it covers the distance, the tonal value gets reduced. In this way, I have just converted a square into cube. It's turned to create a triangle, and now I am going to create a pyramid and also a cone. आप अपने आसपास के रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे उन पे लाइट पड़ती है एंड कैसे शेडो क्रिएट होती है। इसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप हो जाएगी एंड आप समझ पाएंगे कि लाइट एंड शेडो का कॉन्सेप्ट आपको स्केचिंग में कैसे ऐड करना है। So our pyramid is ready. Now I am going to create a cone. So guys, in this way you can convert your shapes into forms. I hope आपको ये वर्कशॉप काफ़ी अच्छी लग रही है और इस वर्कशॉप से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। So guys, इस वर्कशॉप में मैंने जस्ट आपको कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ पेंसिल शेडिंग के बारे में बताया है, वेरियस वैल्यू स्केल्स के बारे में बताया है एंड 2D को 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। सो गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस वर्कशॉप। अगर आपको ड्राइंग एंड स्केचिंग के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप मेरी ऑनलाइन आर्ट क्लासेस की सभी वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है एंड यू कैन चेक आउट दीज वीडियोस ऑल्सो। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। I will definitely plan some other tutorial videos on these particular topics, or I will arrange some other workshops for you also. So guys, if you like this workshop, also share with your friends, give me thumbs up and also subscribe if you are new on my channel. Thank you so much.